Hello, you're watching Hornbill TV's Nordic Express Bulletin. Communist Party of India Marxist Politburo member and former Chief Minister Manik Sarkar on Saturday urged the state's government to be watchful and cautious about sinister designs coming into play in the form of militancy threats. Sarkar said militancy is trying to raise its highly ugly head once again in Tripura. Militants are reportedly entering Tripura from outside, and it is the responsibility of the government to take note of that and take effective measures, he said. The government should note from where the militants are arriving and which key the locations are, the former chief minister said. His government was successful in eliminating insurgency. Security forces like BSF, CRPF and TSR had been given free hands to deal with the situation, he said. If the government fails to do that, it should be considered a failure on its part, Sarkar said. আমাদের রাজ্যে এই সমস্যাটা মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার নিশ্চয়ই তার কাছে খবরাখবর থাকবে যদি না থাকে এটা সরকারের দুর্বলতা হবে কাজেই বাইরে থেকে জঙ্গিরা আসছে এটা কোন জায়গা থেকে আসছে কোথায় তারা সংগঠিত হচ্ছে তাদের পেছনে কোন শক্তি এটা তো সরকারই সবচেয়ে ভালো জানবে আমরা সরকার চালাবার সময় তো এইগুলির প্রতি নজর আমাদের ছিল ফলে আমরা মূল জায়গায় আঘাত করার চেষ্টা করেছি মতাদর্শের লড়াইটা যেমন তাদের বিরুদ্ধে আমরা করেছি এবং তাদের কিছু যুক্তিসঙ্গত সমস্যা নিয়ে তারা কথা বলবার চেষ্টা করত সেগুলো সমাধানের জন্য আমরা সরকারিভাবে উদ্যোগও নিয়েছি উন্নয়নমূলক কাজ এবং তারা যে সীমান্ত অতিক্রম করে রাজ্যের ভেতর ঢুকে গোলমাল বাঁধাবার চেষ্টা করতেন সেই সীমান্ত খুব দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করে বিএসএফ সিআরপিএফ আমাদের টিএসআর তাদেরকে সমন্বিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমরা বলতাম এবং সেখানে তাদের স্বাধীনতা ছিল তো এগুলো যদি সরকার গ্রহণ না করে তাহলে সমস্যা বাড়বে এবং এই জায়গায় সরকারকে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে জনগণ শান্তি চায় তারা সন্ত্রাস চায় না তারা সম্প্রীতি চায় আমরা দেখেছি এটা চাই বলেই মানুষের বড় অংশ সরকার থেকে উদ্যোগ নিয়ে যখন রাজনৈতিক প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক ভূমিকা নিয়ে এটাকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ অংশের মানুষ একটা ছোট্ট অংশকে বাদ দিলে পর তারা সেখানে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে আমাদের রাজ্য সরকারকে সেই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে Tripura Power Minister Ratanlal Nath on Saturday urged members of the Airtel Municipal Corporation to play an active role in making the PM Surya Ghar scheme popular in the urban households. This is to reduce spending on electricity substantially. According to Nath, the most important ingredient of the scheme is that once a household installs solar panels under the scheme at subsidized rates, the monthly electricity bill generated from the household will reach near zero. In order to make the scheme popular, the authorities are organizing a special camp on January 6 at the office of Tripura State Electricity Corporation Limited Office Complex, he said. The idea behind the camp is to invite people of Agartala city to come over at the camp and understand what benefits they are entitled to if they get themselves enrolled for the scheme, the minister said. He requested the Agartala Municipal Corporation members to be at the camp where Bengals will also be attending. প্রতিটি ব্যক্তির যাতে বিদ্যুৎ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ি ঘরে মুফত বিদ্যুৎ যাতে পেতে পারে সেই জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি বিদ্যুৎ নিগম পিএম সূর্যঘর একটা প্রকল্প রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের 2026-এর পরে এই প্রকল্পটা থাকবে না সোলারের মাধ্যমে যাতে বিদ্যুৎ পেতে পারে এবং প্রায় বিনামূল্যে সেই জন্য সোলারের মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য মানুষকে অনুরোধ করব এটার জন্যই আমাদের এই মিটিং আজকে এখানে 6 তারিখ আমাদের বিদ্যুৎ নিগম কার্যালয়ে একটা আয়োজন করা হয়েছে যাতে এই সোলারের উপরে আমরা ডিসকাশন নয় বেশিরভাগ শহরের লোক যেন ওই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে যায় সেখানে যেন রেজিস্ট্রেশন করতে পারে
সেখানে ভ্যান্ডাররাও থাকবে, ব্যাংকের লোক থাকবে এবং হাতে কলমে সব বুঝিয়ে দেবে। সেই জন্য আমাদের জনপ্রতিনিধি যারা আছে শহরে তাদের সাথে আলোচনা করে সেখানে যেন গ্রাহক ওখানে যেতে পারে, সেই জন্য আজকে আলোচনা। সকালে আর্জেন্ট একটা মিটিং, আমাদের মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করেছি আপনার যে কর্পোরেটররা আছেন তারা যেন সবাই একটু কষ্ট করে থাকে, তাদের সাথে 10 মিনিট একটু আলোচনা করব, এটার জন্য আজ আলোচনা। স্যার, সোলার প্ল্যান্ট বসাতে কোনো ধরনের কি ঋণের ব্যবস্থা থাকবে? সব ব্যবস্থা থাকবে, ব্যাংক থাকবে, গ্রামীণ ব্যাংক থাকবে, কোঅপারেটিভ ব্যাংক থাকবে, আমাদের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া থাকবে, আরও অন্যান্য ব্রাঞ্চ থাকবে, সবার ব্যবস্থা আছে সেরকম। সেই জন্য আমরা একটা মেলার মতো আয়োজন করেছি, শিবিরের মতো, যাতে সবাই উপস্থিত থেকে এই সুবিধাগুলি জানতে পারে, সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে পারে এবং ব্যাংকের সাহায্য বা আমাদের কার্যকর্তা যারা আছে বিদ্যুৎ নিগমের তারা যেন বুঝিয়ে বলতে পারে, 1 to 1 সেখানে সব ডিসকাশন হয়ে সেখানে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। The Tripura state government is all set to launch a mega quiz competition, Jagrati, across the state to raise awareness among the students about important issues such as road safety, drug abuse and consumer rights. Transport Minister Suchanda Chaudhary gave updates about this. The series of events will officially begin on January 11, 2025, the minister said. Elaborating on the issue, Chaudhary said the program will be jointly organized by the Food and Transport departments. The department has decided to hold the campaign annually in the month of January and February. As part of this initiative, quiz competitions on topics such as road safety, consumer rights and the adverse effects of substance abuse will be conducted in 25 degree colleges across the state, he said. The program will start on January 11 in Uttaipur, where students from degree colleges in Komati, South Tripura and Sibahijala districts will participate in the quiz competition. Similar events will be held on January 18 in Kumarghat for students from colleges in Talai, Unagoti and North Tripura districts, January 27 in Akardala for colleges from West Tripura and Kowai districts. The top 3 teams from each event will compete in the grand finale on February 8 in Akardala, said the minister. Students interested in participating in the quiz competitions must register by January 10 for the Uttaipur event. The registration is closing for Kumarghat event on January 14. The last date of registration for the Akardala event is January 25. এটা আমরাও এই ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন আছি, কারণ আপনি দেখেছেন যে নিশ্চিন্দপুরে প্রায় 1000 কোটি টাকার প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। In spite of the fact that honorable prime ministers of both the countries, India and Bangladesh, our Modi ji as well as Sheikh Hasina, the then prime minister, they virtually inaugurated the project. আমাদের ইন্ডিয়ান পার্টে জেনারেল অনগোয়িং প্রজেক্ট এবং বাংলাদেশের পার্টে কাজ চলছিল। আমাদের ইন্ডিয়ান পার্টে কিছুটা কাজ শেষ হয়েছে, আবার কিছুটা কাজ পেন্ডিং, বাংলাদেশেরও কিছুটা কাজ পেন্ডিং। It was expected. What is your view on that? See, whatever communal tensions took place in the recent past, instead of criticizing it, he must well appreciate the way our Honorable Chief Minister, in connivance with Government of India, has tackled the situation. That should be appreciated. Instead of appreciation, if he is bent upon criticizing always, that is unfortunate. Because he also was on the helm of affairs as Chief Minister consecutively for 20 years. So it was not a cakewalk at all to run the show as a Chief Minister. So Transport Department থেকে Anti-Drug Addiction Committee and Road Safety Committee in all educational institute, university, college and school, government এবং private, এই লেভেলের স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে আমরা কনস্টিটিউট করেছি, আমরা কমিটি করেছি। অর্থাৎ ড্রাগ পুলিশ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কাজ করছে ড্রাগকে বন্ধ করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে। Northern Central Railway is prepared with top-class facilities to welcome devotees in Prayagraj.
Temporary shelter houses are ready to offer short-term solution to passengers arriving in large numbers. From ambulances to mini ICUs, medical team is fully equipped with latest technology to treat common injuries and illness. Railway overbridges will ensure smooth flow of traffic when city thronged by devotees in coming days. Travellers will not need to stand in long queues to get tickets, but TTs wearing QR codes can be readily seen outside the stations. To monitor all the management's control and observation room to keep close eyes on activities. में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और लोगों की ऐसी आस्था होती है कि बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या इवन हर आयु वर्ग के लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोगों की ऐसी आस्था भी होती है कि हम स्नान के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे या और उन्हें कोई रेगुलर कोई मेडिकेशन पे चल रहे होते हैं, तो या अथवा अधिक भीड़ होने के कारण या ठंड बहुत अधिक है इस कारण से अथवा किसी अन्य कारण से भी कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो रेल प्रशासन इसको लेके सतर्क है और हम लोगों ने जो 2019 का कुंभ था उसमें भी 1 लाख से अधिक लोगों को ओपीडी और लगभग 3000 लोगों को क्रिटिकल जो स्थिति में थे उनको भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की थी और कोई भी कैजुअलिटी होने नहीं दी थी। इस बार हम लोग और बेहतर तरीके से तैयार हैं। रेल प्रशासन अपने हर प्लेटफॉर्म पे मेडिकल बूथ रखेगा, हर यात्री आश्रय शेड पे हमारे मेडिकल बूथ होगा जहां पे डॉक्टर पैरामेडिकल की टीम तैनात रहेगी, उन्हें हर तरह की प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई लोग कुछ गंभीर स्थिति में हो जाते हैं तो उसके लिए हमने प्रयागराज जंक्शन पे जैसे 6 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम है, बाकी जो हमारे स्टेशन है वहां पे भी 4 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम स्टेब्लिश किए हुए हैं जो मिनी आईसीयू की फैसिलिटीज से युक्त हैं, जहां पे अगर कोई व्यक्ति कुछ गंभीर है तो उसे भी हम लोग टेक केयर कर सकते हैं, उसका भी इलाज किया जा सकता है। अगर आवश्यकता पड़ती है कि उन्हें किसी ट्रॉमा सेंटर में या किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की आवश्यकता है तो उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस अपनी तैनात कर रहे हैं जो कि रेलवे प्रेमाइसेस में हर समय प्लेस रहेंगी और अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी यात्री को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। हमारे पास प्राइमरी एड देने के लिए फर्स्ट एड बूथ्स काफी सारे हमने लगाए हुए हैं। हर प्लेटफॉर्म पे एक बूथ रहेगा जिसमें 24 आवर्स डॉक्टर्स भी पोस्टेड रहेंगे। इसके अलावा सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की हमारे पास टीम होती है और एक रैट टीम भी होती है जो कि स्टेशन हर प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे आपको मिलेगी। तो कोई भी इमरजेंसी होता है तो ये सारी टीम एक्टिवेट हो जाती हैं और वहाँ से पेशेंट शिफ्ट करके इस ऑब्जर्वेशन रूम में जहाँ इस वक्त हम लोग बैठे हैं यहाँ पर उनको लाया जाता है और यहाँ पे जिनका प्राथमिक उपचार किया जाता है। मैम मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, ऐसी सिचुएशन में वो यहाँ आए तो यहाँ पर क्या रेलवे की तरफ से वो उपकरण हैं कि उनको तुरंत बचा लिया जाए? क्योंकि अमूमन होता है कि लोग खड़े खड़े भी गिर जाते हैं, पता लगता है कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। ऐसी सिचुएशन में आपके पास वो उपकरण है जो उनकी जान बचा सके और थोड़े वक्त के लिए यहाँ उपचार करा के आगे भी ट्रांसफ़र किया जाए अगर सीरियस सिचुएशन है? हाँ जी, हमारे पास ऐसी सारी सुविधाएं मौजूद हैं इस आईसीयू में जिसको हमने मिनी आईसीयू कहा है। वैसे ये ऑब्जर्वेशन वार्ड के नाम से बाहर इसका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे जैसे ही कोई पेशेंट आता है, सपोज कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे सुविधा मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास डिफिब्रिलेटर मशीन भी है और यहाँ पे जितने सॉर्बिट्रेट टाइप की जो जनरल मेडिसिन होती हैं या इंजेक्टेबल्स हैं सारे अवेलेबल हैं। अगर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाला है जैसे अस्थमा की अगर तकलीफ है तो उसके लिए नेबुलाइजर यहाँ पर हमारे पास है। राउंड द क्लॉक नर्सेज भी रहेंगी और चूंकि डॉक्टर्स भी रहेंगे इसलिए सुविधा देने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये एक तरह से कुंभ मेला के लिए ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है जो कि एक मिनी हॉस्पिटल और मिनी आईसीयू की तरह भी आप बोल सकते हैं, जिसमें कि 6 बेड है और 3 बेड का एडिशनल प्रोविजन ऐसे बनाया गया है और यहाँ पे 24/7 एम्बुलेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी मेले घूमने आएंगे शरणार्थी उनके लिए फर्स्ट एड के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि अगर किसी को छाती में दर्द हो जाता है या किसी को अनरिस्पॉन्सिवनेस या किसी को फ्रैक्चर या कोई भी समस्या ऐसे हो जाती है तो उसके लिए सभी सुविधा यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन, डिफिब्रिलेटर और स्ट्रेचर। और जैसे कि शिफ्टिंग के समय कोई समस्या ना आए तो यहाँ पे एक एडवांस लेवल की स्ट्रेचर मौजूद है और
ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन है, सक्शन मशीन है, किसी को ब्लीडिंग हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है तो सक्शन करने में सक्शन मशीन भी यहाँ पे मौजूद है। और कार्डियक अरेस्ट के दौरान डिफिब्रिलेटर जिसको कहते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर मशीन भी है और कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए, SpO2 मॉनिटरिंग के लिए। और जैसा कि देख सकते हैं पीछे सारी फर्स्ट एड की दवाएं, और अगर किसी को ट्रॉमा हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए बैंडेजिंग करना और ये सब भी सारी चीज़ें हैं। और चोट लगने के द्वारा टेटनस इंजेक्शन और सारी सब फर्स्ट एड की मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध है। Japanese woman Tomika Ituka, born before the start of World War I, who was believed to be the oldest person in the world, passed away at a nursing home in Japan's Sashiya at the age of 116, the New York Times reported. She is survived by one daughter, one son and an unknown number of her five grandchildren. In a statement issued on Saturday, Ashiya Mayor Ryosuke Dagashima said Ituka passed away last Sunday, the New York Times reported. He did not mention the cause of her death. However, local media reports said that she died peacefully due to complications related to old age. Ryosuke Takashima said Ituka gave people courage and hope throughout her long life. Guinness World Records has expressed grief over her death. In a post shared on X, Guinness World Records expressed sadness that the world's oldest person, Tomika Ituka, has died. In September 2024, the Guinness World Records had declared Tomiko Ituka as the oldest living person following the death of Maria Brañas Morera of Spain at the age of 117. She had made a public appearance in May 2024 when she celebrated her 116th birthday and city's mayor paid her a visit according to Guinness World Records. Ituka was born Torniko Yano in Osaka on May 23, 1908. She was one of the 3 children in a family that ran a clothing store. At that time, Japan was a rising imperial power that had defeated Russia in war and was embarking on expansion into mainland Asia, the New York Times reported. The oldest person living is Tomiko Ituka, who is 160 years and 160 days old on 16 September 2024. 伊藤家富子さん、116歳と116日で存命中の最高齢としてギネス世界記録認定となりました。おめでとうございます。The Tibetan lawmakers in exile have criticized China for imposing sanctions against 2 civil society organizations and 20 individuals associated with the organizations in Canada. The sanctions target the Uyghur Rights Advocacy Project, the Canada Tibet Committee and 20 individuals associated with the organizations. The Deputy Speaker of the Tibetan Parliament in exile, Dolma Tsering, said that the decision shows how far the Chinese Communist regime's hands can go. She urged nations of the United Nations and all free democratic nations to stand up against this and not delay in condemning China's action. This shows how far the Chinese communist regime's hands can go. Because when we say Tibet is reeling through atrocity and subjugation, and not only they are satisfied with occupation of Tibetan land and controlling the Tibetan people inside Tibet, but their hand is also reaching out beyond the boundaries. Therefore, we say that Chinese policies are meant not only within what China have occupied, but even in the free world also, they are making the people fearful of what they do in the free world. Therefore, putting sanctions on Tibetan community society and the Uyghur community society in Canada is just an example. Even within Tibetan refugees also, those who have their relatives there, through their relatives, the Tibetans inside India, the free world, they are getting, they are being intimidated. They are made to make themselves isolation from the advocacy and the cause of the Tibet. It's been going for quite a while, but now the world knows that transnational aggression of China should not be tolerated if you want that you don't want your citizens to be
intimidated by China, their stringent policy against human rights. And China being one of the signatories of Human Rights Convention, Universal Declaration of Human Rights, so in their own, I'm sure in their own constitution and the basic law also, there are so many good things that they don't really abide by. So it is up to the free world and the United Nations to make them accountable. So you condemn this behavior? I truly condemn this, and not only we Tibetans in the refugee states are condemning it, we want the United Nations, the countries of United Nations and all free democratic nations to stand up for this. Today it is us, tomorrow it could be you, your citizen. So let us not delay in condemning and taking a stand on this. Also speaking to ANI, member of Tibetan Parliament in exile, Namgyal Dolgar called China's action a definite threat to a nation that holds veto power in the United Nations Security Council. She said that China has previously imposed sanctions on members of parliament. However, she noted that China has for the first time imposed sanctions against NGO and individuals working there and termed Beijing's actions shameful. Threat that I see this as a definite threat that China is extending for a nation that holds a veto power in the Security Council of the United Nations, for it to be so scared of an organization, an independent organization working in Canada. It basically shows how it remains scared. Despite being this dictatorial regime, any sort of voices against it is being looked upon as a threat. And I believe that such an important nation that holds a Security Council position to take such a decision, so far we have only seen it come up with sanction against member of parliaments around the world. But it's for the first time that we have seen it imposing sanction on an NGO and individuals working there. So it is just very shameful on the part of China, but then it's China, so what else to expect? But what is, I think, threatening in the way is the fact that I see this sort of trend spreading across different countries. There are possibilities that any form of voices against Chinese Communist Party will be treated the same way. It started off with Canada. It will extend to different nations, including India. This is how I look at it. There are so many NGOs, Tibet-based NGOs in India who are working constantly in exposing China, and I see that as coming trend in near future. So you condemn this? Definitely, of course. That's all for now. Keep watching Hornbill TV.